हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइटेड रोड। मेरे को यार आज बहुत सारी चीजें बोलनी है, तो आई विल गेट स्टार्टेड वंस पीपल स्टार्ट्स टू गेट इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दो मिनट रुकते हैं, एक दो मिनट रुकते हैं और उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा लिंक भी शेयर कर दूं यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें बोलनी है। ठीक है, आई एम जस्ट वन ऑफ देम, बट और क्या ही बोलूं मैं, बट एज आई सेड थोड़े सा लोग और आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट। भाई एग्जैक्टली तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, बट मैं क्या बोलूं, मैं अभी और क्या ही बोल सकता हूँ। यहाँ पे ज्यादा बोलूंगा लोग बोलेंगे ऑफेंसिव हो रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ऐसे गाली दे के क्या करेगा, ये वो फलाना ढिमका। आ जाएंगे मोरल पुलिसिंग करने। दुख भाई खत्म होगा भी नहीं। शैटर्ड, राइट वर्ड। भाई ये क्लब नहीं भी खेलता है ना, इवन इफ दे आर नॉट प्लेइंग, दे हैव द मैजिकल सुपर पावर्स ऑफ फकिंग अराउंड विथ एवरी यूनाइटेड फैन। ठीक है, ये सुपर पावर है इनके पास। भाई बन चुके हैं, बन चुके हैं। सबको जय जिनेन्द्र भाई, लग गया है विजय भाई, बिल्कुल लग गया है। हेलो आयुष भाई, आदित्य भाई, सबको वेलकम है यार। एग्जैक्टली मैं दो तीन चीजें हैं यार जो मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, जिस तरीके की न्यूज आ रही है इन द मार्केट, उस पर भी डिस्कस करेंगे। गुस्सा जो मेरा है, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द ग्लेजर्स। मैं सर जिम रैटक्लिफ पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड। ठीक है, तो मुझे ये भी देखना है कि भाई नाउ दैट कतार इज आउट, आगे किस तरीके से चीजें चलती हैं। भाई ग्लेजर्स के साथ क्या होना चाहिए ध्रुव भाई, अगर यहाँ पे सारे बंदे बोलने लगे ना, तो ये चैनल बंद हो जाएगा आज। सच बता रहा हूँ, इफ एवरी वन कम्स आउट एंड स्पीक द वे दे वॉन्ट टू स्पीक, ध्रुव भाई ये चैनल बंद हो जाएगा। मैं ठीक हूँ भाई, क्या हालचाल। सुकून तो है ही नहीं भाई, दैट्स द थिंग, वी डोंट हैव एनी सुकून। एज अ यूनाइटेड फैन डोंट एक्सपेक्ट सुकून। मैं देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज बताता हूँ, वी आर टू बिग टू रीच दैट स्टेज। ठीक है, हम बन के रह जाएंगे भाई जो वेंगर के टाइम पे आर्सेनल था। ठीक है, टॉप फोर आ गए, दैट वुड बी इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारा लेवल रह जाएगा और कुछ नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल, मैं वही चीज बोल रहा हूँ यार कि दो दो चीजें हैं जो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मन बहुत बहुत कुछ कर रहा है बोलने का, बट भाई यूट्यूब वैसे ही व्यूज नहीं देता, ऊपर से गाली गलौज कर दी तो पता चला जो भी थोड़े बहुत लोग आते हैं उनको भी चैनल से गायब ना कर दे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कतार इज आउट। ये लोगों को अभी तक पता लग गया होगा, जिनको नहीं लगा है भाई फिर से सुन लो। शेख जासिम इज आउट ऑफ द रेस फॉर द टाइम बी। कल को ग्लेजर्स मुंह उठा के चले जाए कि भाई एक काम करो, जितना दे रहे थे दे दो, तो फिर अलग की बात है, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज ऑल दे वांट इज टू कीप अ होल्ड ऑफ द क्लब। कतार को पूरा का पूरा क्लब चाहिए, उनको 25%, 20%, 18% नहीं चाहिए। They want the entire club for themselves. They had everything, every plan put in place. Simple as that. Liverpool before Klopp, absolutely. Exactly why that's the scene. That's the scene. मैं बोलूंगा मेरे को यहां से बैन कर देंगे, मैं ट्विटर पे ज्यादा बोलूंगा मेरे को वहां से बैन कर देंगे। See, our fan base will forever be divided and broken. ठीक है, because of social media, because of agenda peddlers. ठीक है, we will always be broken. Don't expect
fan base which will be united, no, regardless of whoever comes. There are fans who will have no problem at all. सजिम रैटक्लिफ आता है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो भाई वी विल डेफिनेटली प्रेज, ठीक है. बट जो ऑलरेडी कतार, वो गाली ही देंगे भाई अगर वो अच्छा भी करेगा तो. भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ दे बाई स्पर्स और वेस्ट हैम, आई एम नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट फियरफुल. बट अगर उन्होंने लिवरपूल या कुछ और खरीदा तो भाई वो हमारे को नंगा करके मारेंगे फ्रस्ट्रेशन में. वेस्ट हैम, स्पर्स, यहाँ पे लोग फिर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट वांट टू गो. दैट्स अ फैक्ट, ठीक है. दे आर नॉट अ टॉप नॉच क्लब. बट इमेजिन समवन लाइक लिवरपूल अंदर कटार. देखते हैं भाई कल क्या होगा. टुमारो व्हेन द शेयर मार्केट ओपन क्या होगा वो देखने वाली बात है. That's the fact, bhai. That's a fact. Arjast bhai, thanks a lot for the super sticker. First one for the day really means a lot. अंशुल भाई देखो वही वाली बात है. I will be very sensible. मेरे को यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं कराना. मेरे को यहाँ पे जो चीजें सामने है, ठीक है. When we are on a phone, when we are on social media, it's very easy to go out and write, go and cancel the games, go out and riot. ठीक है भाई. you guys, people who say that go out and riot, will you be there when the riot happens? Will you be there when the riot happens? You won't be. और riot के चक्कर में जो अंदर जाएंगे उनका क्या होगा फिर? Their career is gone. तो it's very easy to come out and say go out and riot. ये कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, ये जला दो, वो जला दो, उनका घर जला दो. it's very irresponsible कि भाई कोई बंदा जाके बोल रहा है ये कर दो, वो कर दो. अरे भाई एक बार ही हो गया. द पुलिस वॉज नॉट रेडी जब लिवरपूल वाला गेम गॉट कैंसल्ड. व्हेन लिवरपूल गेम गॉट कैंसल्ड, द पुलिस, दे वर नॉट रेडी, एंड आफ्टर दैट नहीं किया. भाई प्रोटेस्ट करना इज वन थिंग. तुम स्टेडियम के अंदर घुस के स्टेडियम तोड़ दोगे, क्या हो जाएगा उससे? जेल जाओगे तो अलग. SJ is not gonna buy Liverpool. Yeah, they are already looking at Italian clubs. Yep, we are going to talk about this as well. ठीक है, इस पे भी बात करने वाले हैं. भाई क्या ही बोलूं जो है. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग. ऑल्दो ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी. आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी नॉर्मल. नहीं भाई, इट्स नॉट गोना हैपन. It's not gonna happen. They have waited enough, and even as Romano said in the last few days, they even made up a new bid. Glazers family, they did not say anything. My Everton is already getting sold. They are getting new owners. वो already new owners उनको मिल रहा है. Exactly. See, I will talk about pros and cons of both the scenario. ठीक है, दोनों सिनेरियो की बात करने वाला हूं भाई. एक तो ये 25% वाला सीन, ठीक है, 25% वाला सीन. According to the reports, when he is buying 25%, he wants to take over the entire club in the next 2 years, 2 to 3 years. ये सुनने में आ रहा है. How true is that? I have no idea. Why it was not about agenda. Luckhurst, भाई देखो, at this point of time you can go out and shift the blame to anybody. It's entirely on the snakes. ये ग्लेजर्स की करतूत है भाई. डोंट पुट इट ऑन क्रॉफ्टन और डोंट पुट इट ऑन विटवेल और लखस्ट. वो चूतिया है तो है, दैट्स अनदर थिंग. भाई 25% एज आई सेड वो बेचने को तैयार है. सारी न्यूज यही बोल रही है, बट लेट्स सी. गाइस लाइक करते जाओ. एज आई सेड वी विल कंटिन्यू विद दिस. हेलो रतीश भाई, क्या हालचाल? ऐसा नहीं होता है भाई.
तुम्हारे पास पैसा है तो 5 रुपए की चीज के 50 रुपए में देके खरीदोगे? जस्ट टेल मी संकेत भाई, 5 रुपए की पार्ले जी की बिस्किट का डब्बा 50 रुपए में खरीदोगे? अरे मेरे पास पैसा है। अच्छा, वॉच अलोंग से क्या हो जाएगा भाई, मेरे को समझा दो जरा। वॉच अलोंग बंद कर देने से क्या हो जाएगा, मेरे को चीज समझा दो। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, वॉच अलोंग बंद करने से क्या हो जाएगा, मेरे को समझा दो। हेलो रवि भाई, क्या हालचाल? शेयर होल्डर आदित्य भाई, वेलकम। अकमल भाई, दैट्स द थिंग at this point of time we don't know the entire story of what he actually wants. 25% का आ रहा है, ठीक है। in how many years he wants to get the club, उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है? यार वो कुछ बोलता ही नहीं है ना, सर जिम रैटक्लिफ कुछ बोलता ही नहीं है। आई विल पुट मैनचेस्टर इन मैनचेस्टर, अबे लवड़े, आई विल पुट मैनचेस्टर इन मैनचेस्टर। प्लान देना यार, गिव अस सम प्लान, गिव अस सम क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा। दिखावा, ढोंग, पाखंड, दीज आर द 3 वर्ड्स, ये आ रहा है बस। भाई he cannot do anything more than this, he cannot। people are like, दे दो यार 10 बिलियन दे दो। यहाँ पे 25 रुपए की भिंडी खरीदने में 5 बार ही को बोल देंगे भाई 25 का 20 लगा दो, लेकिन नहीं, दूसरे का पैसा है तो 10 बिलियन दे दो। भले ही 40 रुपए की भिंडी 35 रुपए के लिए 5 दुकान घूम जाओ, इट्स अ फैक्ट। दूसरे का पैसा है तो बहुत बोलना आसान है भाई, ये कर दो वो कर दो। भाई they have backed out because Glazers family, they are an absolute pain in the ass, so that's why they have uh, gone out of the bid. Exactly, no, they cannot fool us, they cannot fool us, it's as simple as that. So you think the people who watch it on YouTube, they contribute to the club? मतलब भाई सेंसिबली तो बोलो, थोड़ा कुछ लिखने से पहले सोच तो लिया करो। एग्जैक्टली भाई, मैं तभी आई डिड नॉट कम टू द स्ट्रीम लेटर यस्टरडे। मैं थोड़ा फैमिली के साथ भी था, मैंने बोला छोड़ो यार, सर में दर्द नहीं लेता। माइनॉरिटी ऑनर होगा भाई सर जिम रैटक्लिफ, इसमें तो अब कुछ डाउट बचा भी नहीं है। There is a reason why they have, you know, kicked him out. There is a reason. भाई होएगा, पता है क्या, पता है क्या, 25% they will give to the, they will give to सब जिम रैटक्लिफ, ठीक है, 25% दे देंगे। एंड उसके बाद फुल ऑन एजेंडा चलेगा कि भाई जो जो फुटबॉलिंग डिसीजंस है ना, जो फुटबॉलिंग डिसीजंस है, दैट विल बी टेकन बाय सर जिम रैटक्लिफ। ये चलेगा फुल ऑन प्रोपेगेंडा। नहीं होने वाला भाई, फालतू की बातें हैं ये, फालतू की बातें हैं। मर्चेंडाइज तो यार वैसे भी मर्चेंडाइज का ना के बराबर जाता है, मर्चेंडाइज का तो कोई लॉजिक मेरे को वैसे भी नहीं समझ में आता। ऑल दो जो भी बायकॉट करता है फाइन, मैं करता हूँ, मैंने बहुत लोगों को करवाया भी है, बट मर्चेंडाइज का बहुत, नॉट इवन दिस रीचेस द ओनर्स, वो जाता है ग्लेजर्स के, वो जाता है एडिडास के पास जो जर्सी बना रही है भाई। भाई एवरीवन थॉट सो, everyone thought so, but I am happy that we have clarity, ठीक है, I am happy that we have clarity। चाहिए मेरे को भी कतार ही था, you know, majority of the fans wanted him because of his overall plan। people who are saying na, people who says that oh we don't need state money, of course we don't need state money, we need someone who will be taking decision for the club, that's what we need। ये प्लान घंटा किसी को नहीं पता भाई, nobody knows।
Why? The only way you can hurt them is by absolutely boycotting Old Trafford. Absolutely boycotting Old Trafford, जो कि नहीं होने वाला. It's not possible. फिर आ जाएंगे मैच गोइंग फैंस हमें देने ज्ञान. Have you ever visited Old Trafford? Have you ever visited Old Trafford? बस इसके अलावा कुछ करना या उनको बोलना कुछ आता नहीं है. एग्जैक्टली exactly. हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई. एक नंबर के चोदू लोग हैं हम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. David, to be very honest, the news that I am getting is within 3 years there will be 100% takeover. Within 3 years, I'm not sure. That's the news that's coming in. Fair enough, भाई. जिसको जो सपोर्ट करना है वो करे. Those who want to support their local club, different club, that's on them, यार. I don't get into that. Hello, शाहिद भाई, क्या हाल चाल है? भाई, it's very difficult. That's what I'm saying. Because we have a global fan base. People give example of AC Milan. People give example of Valencia. अरे भाई, उनका fan base local है. The match going fans that they have, they are local. If they want, and they have an ultras culture, वहां पे अल्ट्रास बम्बू कर देंगे. अगर कोई मैच देखना भी चाहता है तो अल्ट्रास उठवा लेंगे उसको. करके दिखा दो ये इंग्लैंड में. लेंगे भाई, लेना चाहिए भी. मजे लेना चाहिए भी. भाई देखो अजमल भाई, आवर फैन बेस इज ऑलरेडी डिवाइडेड. आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट आवर फैन बेस इज ऑलरेडी डिवाइडेड. कुछ इसमें ऐसा है ही नहीं सोचने वाली चीज वापस से. दबिक भाई, क्या हाल चाल भाई? वो भी मैं वही बोल रहा हूँ ना. देर आर सो मेनी टूरिस्ट हु गोज टू एवरी गेम. मैं तभी बोल रहा हूँ, it's not easy. People who compare us with the likes of Valencia and AC Milan, it's not easy. See, David, that's the thing. You know, he made his PR, he made his agenda, he did a lot of things. भाई मपेट वाली वीडियो मैं देखता नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं देखता ही नहीं मपेटियर्स के वीडियो. सेम ईयर भाई, सेम ईयर. भाई मैं वही बोल रहा हूँ, वेलकम टू द स्ट्रीम. ब्लेम गेम करना ना, इट्स वेरी इजी. किसी का भी उठा के मुंह और किसी को भी ब्लेम कर दो, इट्स वेरी इजी. You know, that's why I never blame the match going fans. ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे हैं जिनके टिकट्स कैंसिल हो जाएंगे. यहां से बैठ के बोलना आसान है. इट विल ओनली वर्क इफ द इंटायर फैन बेस डू इट. ठीक है, सपोज करो 70,000 एज हरिभाई सेड. इमेजिन वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 70,000, 73,000, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, उसमें से भाई 50 बंदे बोल रहे हैं मैं ठीक है, मैं मैच देखने नहीं जाऊंगा. क्या होगा? उनके टिकट्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी को फर्क ही नहीं पड़ रहा. So even the match going, as Haribhai said, 30, 40, 50,000 people, if they say okay, no to the games, then only it's gonna happen. कि चलो एटलीस्ट 2/3 तो बोले that we don't wanna go to the stadium. 1500 लोग बोल देंगे, क्या हो जाएगा उससे? Nothing's gonna happen. It's as simple as that. ये उस पर भी नहीं छोड़ेंगे भाई, ये उस पर भी नहीं छोड़ेंगे भाई. Nobody is coming. We all know what's gonna happen. It's gonna be Sir Jim Ratcliffe with 25%, but let's see. That's what I'm saying, David. I can say a lot of things, but then we have to be sensible.
people who are in favor of Ratcliffe, that's on you guys. I'm not gonna say कि भाई तुम ये हो तुम वो हो, why and why not. But a guy who is willing to be in the bed with the Glazers, I seriously have nothing else to say. 25%, we will see how it actually pans out. Exactly. People need to understand. Kartike bhai, that's what I keep on saying. As a club, we don't need money. As a club, we need people who can utilize our money in a better way. पैसा तो इतना है भाई कि मैं क्या ही बोलूं. ठीक है, क्लब के पास पैसों की कमी नहीं है. वी मेक सो मच मनी. नहीं भाई, अब कुछ नहीं होने वाला. The Qataris, they have taken it on their egos, and that's totally fine. You know, that's totally fine. Nothing can be done. वो बहुत वेट कर लिया उन्होंने. बस मैं यही बोल रहा हूँ भाई. That's what I'm saying. हो गया प्रोपागेंडा चालू. प्रोपागेंडा चालू हो गया. किसी को भाई जस्ट गिव मी अ नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को. आई रियली वांट टू नो. सपोज करो मैं जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन मी एंड मीर भाई. ठीक है, मी एंड मीर भाई आर हैविंग अ बिजनेस टुगेदर. यू नो 100%. ठीक है, 100% का हमारा बिजनेस है. उसमें से मीर भाई गॉट 75% and I got 25%, and then in the market I am telling everybody that you know what, I am taking all the decisions. What if I only have 25%? The guy with 75%, he is doing nothing, I am doing everything. Will anyone believe it? कोई करेगा, कोई यकीन करेगा? सिंपल सी बात है. Just a normal question to everybody. You know, normal question to everybody. Exactly. वेंकटेश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. दिल से बुरा सबको लग रहा है भाई, सभी यहीं पे है. एग्जैक्टली. एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड भाई सबको करना पड़ेगा. इट्स नॉट ऑन 10 people trying to empty the old Trafford. उम्मीद यही कर सकते हैं भाई. उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या ही बोलूं. नियॉन, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन. Fair enough. Those who are not going to support him, I totally agree. I totally agree with what you are thinking and why you don't want to support that person. I totally agree. Exactly, bhai. It's like owning a business, you know, 25% stake in a business and then saying, oh, I take all the decisions. I am the expert. I know everything. United ka downfall is for a very long time. It's just the downfall will continue for a long time now. डाउनफॉल जो है और कंटिन्यू होगा. मैं यही बोल रहा हूँ. डाउनफॉल तो हमारा भाई पिछले 10 साल से चल रहा है. एवर सिंस सर एलेक्स लेफ्ट. I can understand, bhai. I can totally understand. One thing I have always, you know, one thing I also want to talk about. If you guys noticed, the first thing, the first thing that came just after this news was that, you know, was Eric Ten Hag's job is safe. अबे हमें चूतिया समझ रखा है क्या? That's the only guy who is trying something at this point of time. ठीक है? Even if you are not going to keep him, then whom? You know, so सबसे पहले मैनेजर वाला जो है पासा वो फेंक दिया कि भाई फैन बेस को शांत कर दो by saying that the manager is okay. The manager is not going anywhere. He will be here. He will be back. Backed with what? 100 million? इनकी माँ का. Exactly. सेम है यार भाई. सबका वही हाल है. This is what's making every United fan mad.
Venkatesh bhai, this is the problem. You know, every United fan, this is what they are feeling at this point of time. This is something that's haunting them. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता भाई. Honestly speaking, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. See, that's the thing. You know, when the owner says not for sale to that particular person, nothing can be done. Why they want to have more money and they also want to have control. क्या बोलूं मैं? Of course, चले जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है. चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई. वो अब तुम्हारी मर्जी है यार, क्या ही बोल सकता हूँ भाई. देखो, सिंपल सी बात, एक ही चीज बोलूंगा यार. एवरीवन इज ट्राइंग द वे दे कैन. ठीक है, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन. वी आर टॉकिंग, अगर एम्प्टी स्टेडियम की बात करो, देन वी विल हैव टू टॉक अबाउट 40,000 पीपल, 45,000 पीपल. कॉमन सेंस शुड प्रिवेल. ऑलमोस्ट 10 बिलियन राघव भाई, ऑलमोस्ट 10 बिलियन. And guys, one thing, Arjas bhai, thanks a lot for the super sticker. The only super sticker for this stream for the time being. In the meanwhile, Nitin bhai completing 2 months. Nitin bhai, I hope you are getting the articles and I hope you are liking the articles. American greed combining with its British version. Aptly put, that's what's happening at this point of time. It's as simple as that. Very well put. कोई गाली वाली की बात ही नहीं है. This is what's happening at this point of time. And people who wants me to believe that the case is different, no, I'm not gonna believe it. Simple as that. This is the exact case. कोई भाई अगर कोई ले सकता है इसकी फोटो तो ले लो. American greed combining with its British version. That's the actual wording. Simple as that. Exactly. My people are like, Nice is making progress. What progress? 7 games हुए हैं भाई, उसमें वो क्लब अभी सेकंड नंबर पे है. ठीक है. Last season we all see, and even what Dante said, the captain of the club. So if someone is trying to fool me by giving the example of Nice, I'm not buying it. We are already a mid-table club. What are you talking about? We got Champions League last year. That doesn't make us mid-table club. 1 year we get it, next year we are in Europa, and that is mid-table. For a club of United stature, that is mid-table. Old Trafford nahi hona bhai. That's on you. This thought will never come in my mind, to be very honest. It's as simple as that. भाई देखो वेंकटेश भाई, when you talk about Spain, when you talk about क्या बोलते हैं उसको, Italy, there they have the ultras culture. People need to understand. मैं तभी ये बार बार बोलता हूँ, don't compare England with Italy and Spain and the clubs that they have. ठीक है, they don't have 15,000 20,000 tourists in every game, even more than that. They don't have that, so they can try this, these things where they don't buy tickets for 4 games 5 games in a row, where the ultras simply block the roads to the stadium. ये चीजें कर सकते हैं वो. It cannot be done in Manchester. तुम रोक के दिखाओ यार, 20,000 टूरिस्ट, 15-20,000 tourists who have spent so much money, to be in Manchester for that game. Try stopping those people. It's not gonna happen. Exactly. I have heard Nice fans on social media. Yeah. I have seen what they say about him. Kartikeya bhai, to be very honest, at this point of time, they will take anybody apart from Glazers. ठीक है.
We have a divided fan base in terms of Sir Jim Ratcliffe. Since he is British, lot of people, you know, they are welcoming the move because they are like, at least it's a start. I am seeing social media, भाई मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव रहता हूँ. So I am seeing, that's fine. If they think it's a start, I am not going to debate कि भाई ये है वो है. If you feel it's a start, it's fine. But I am waiting for a complete overhaul in terms of what they actually going to do with the club. मुझे ये चीज बताओ, like with Sheikh Jassim, we had an idea of what's going to happen. 1 billion for the community and the stadium and all that. This much money to the owners, this much money, for the training ground and everything. We had an exact plan of what was going to happen under Sheikh Jassim. यहाँ पे पता ही नहीं है. आई विल पुट मैनचेस्टर बैक इन मैनचेस्टर. ये इस भोसरू का प्लान है. फिर लोग बोलते हैं गाली मत दो. फिर लोग बोलते हैं कि भाई ही इज अ यूनाइटेड फैन, ही वांट्स द बेस्ट फॉर यूनाइटेड. मतलब कहां बहन जो बेच आए हो क्या दिमाग? खत्म कर लिया है क्या ऊपर वाला? नहीं भाई, नहीं. शाही भाई, नो hopes unless or until they go out and they end up paying 10 billion. Not gonna happen. We cannot do anything. The only thing you can do is hurt them financially, but not by not going to the stadium. और ऐसा नहीं है कि भाई 50 लोग नहीं जा रहे तो उससे फाइनेंशियली हर्ट थोड़ी होंगे वो. It's as simple as that. They are not going to be hurt financially by 100, by 1,000 people or 1,500 people. They need a collective effort. 40,000, 50,000 people, stadium में साला कोई है ही नहीं. Then it's gonna work. Apart from that, it's not gonna work. कुछ भी बोलो. I'm sorry to hear that, David, but that's our reality at this point of time. कोई मॉडल अप्लाई नहीं होना भाई. कोई मॉडल अप्लाई नहीं होना भाई. That's why I said around 20,000. तभी मैंने उसको अराउंड 20,000 रखा. See, Nitin bhai, I can understand Real Madrid fans, but the City fans in the next 5 years, they won't even be there. So don't worry about City fans, Nitin bhai. But yeah, I can understand the feeling that you are having. I can totally understand that. हाँ भाई, देख लिया. ये कल ही देखा था मैंने. Absolutely, Pranil bhai, totally agreed. Might be more, hopefully less, but let's see. अरे भाई, तुमने कभी सुना है वो जिस क्लब से लिंक होता है ना, वो बोल देता है वो उस क्लब का फैन है. Whichever club he gets linked with, he says he's a fan of the club. If I am a United fan, I won't give a fuck about owning a Chelsea ticket, let alone a season ticket holder. It's as simple as that. मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे को क्या फर्क पड़ता है? It's not gonna happen. What are you going to do? What are you going to do, भाई? बताओ हरी भाई. How can you reduce the impact? ठीक है, कैसे करोगे? कैसे बढ़ाओगे? द क्लब डू इट इन अ वे, ठीक है, जहां से उनका रेवेन्यू जनरेट हो. वो उस तरीके से करते हैं. He is a fan of everybody. Exactly, युगांत भाई, फैक्ट है. I don't want to get into debate or anything कि भाई why somebody wants Sir Jim Ratcliffe or why somebody wants. सबके अपने अपने रीजन है यार. But I really want to see a plan. I really want to see a plan. Venkatesh bhai, yes, officially done and dusted for now. Unless they go out and they are like, all right, guys, we are putting up a 10 billion bid, which we all know is unrealistic and not gonna happen.
भाई इज ऑलरेडी 2.0, ही इज ऑलरेडी 2.0. उसके पास उस तरीके से फंडिंग नहीं है टू गेट द जॉब डन द वे सर जिम सॉरी द वे शेख जासिम वुड हैव डन इट. बट एज आई सेड, at least that for the fans, at least tell them what you are going to do. Fan base will be divided and it's totally fine. It's totally fine. But at least let the fans know what you actually want to do. As a normal United fan, I want to know what are your plans. Even if you are buying 25%, you just want to be minority holders, or you want to take over the club in the next 2 years, 3 years, 5 years, whatever it is. And if you have the club with you, what are you going to do? तो मुझे बताओ तो सही. आई एम नॉट सेइंग भाई मुझे टेक्स्ट कर दो कि अंशुमन भाई दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एटलीस्ट पुट आउट अ परफॉर्मर भाई. बताओ दुनिया को कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द क्लब व्हेन यू हैव द क्लब इन चार्ज. ओटाको भाई, नो. At this point of time, I cannot see any positive. भाई they left because the government was getting involved. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, they have left the race on their own. Exactly. Exactly. Well said. Exactly. People need to understand. Those who are making fun of people who wanted Qatar, they need to understand everybody wanted full sale. And people, even before Qatar got involved, Sheikh Jassim got involved, everybody wanted Sir Jim Ratcliffe because he was talking about being a United fan and owning the entire club, consortium and all those sort of things. Of course, bhai, this is a fact. Exactly. मैंने यही बोला. That's what I said. Nitin bhai, that's what I said. What does it even mean? When we talk about plans about the club, I will put Manchester back in Manchester United. You are not even in Manchester, for fuck's sake. You are a Chelsea ticket holder. What the fuck are you rambling about? Well said, Brian. Welcome to the stream, brother. 100%. %25% just to become, just to be linked with United. That's it. But we are too big for relegation. To be honest, too big for relegation. Well said. I will put Manchester. That's the most rubbish statement I have ever heard. And I live in India with so many politicians. नहीं होना भाई. फिर नीस वाले इसकी मारेंगे. भाई हम मिड टेबल ही है गुरप्रीत भाई. हम मिड टेबल ही है. डार्करो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर. सॉरी आई मिस योर कमेंट अबव. भाई किसी का कमेंट मिस हो जाए वापस से डाल दो यार. See, as a businessman, he has played sensibly. But as a person who talks about loving Man United, he has fucked it up very badly. Very badly. As a businessman, that's a genius move to at least be on the door by getting 25%. But, in a longer run, for the fans, he has shown what he actually believes in. Dekha, I have seen it, David. I have seen the latest comment from them. Aditya bhai, welcome. Well said. I know the frustration
alongside passion I can see in that statement. होएगा भाई, होएगा. रैट का ऑफर एक्सेप्ट होगा. भाई स्काई को बोल, मैं दिखा देता हूँ. आई विल शो इट. आई विल शो इट. वेट, मैं दिखा देता हूँ यार. ट्वीट दिखाने पे चैनल पे बैन नहीं लगता. ट्वीट इज फाइन. यार वो ट्वीट मिल नहीं रहा मुझे. जस्ट गिव मी, हाँ, गिव मी 1 सेकेंड यार. आई एम पुटिंग द ट्वीट फॉर एवरीबडी गाइस. मैं एक बार बोल के भी पढ़ दूंगा. ठीक है. सी, मैं पूरा पढ़ देता हूँ यार. मैं पूरा पढ़ देता हूँ. इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्वीट. मैं पूरा पढ़ देता हूँ. ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ. I will try to copy paste so that everybody. मैं थोड़ा पार्ट्स में डालता हूँ. गिव मी 1 सेकेंड गाइस. गिव मी 1 सेकेंड. आई विल पुट अप इन पार्ट्स. एक बारी में सारा नहीं आएगा. I am putting it for everybody so that everybody can read it. ठीक है, मैं डालता जा रहा हूं. पढ़ लो. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अगेन, क्योंकि ये एक बारी में ना यहाँ पे सारे पढ़ नहीं पाओगे. So I am putting it up for everybody. I really want every United fan to read this. Those who are not on Twitter. Those who are on Twitter, you can read it on Sky Kawai's Twitter. ये है भाई, पूरा स्टेटमेंट ये है. रीड इट फॉर 1 सेकेंड एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. ठीक है. That's why I have shared it. एक बार पढ़ लो. मैं एक बार बोल भी देता हूँ पूरा. Sheikh Jassim walked away from deal for United after refusing to pay more than double of what the club is worth. कोई नहीं देगा डबल पैसा यार. It's nonsense. One source says what is happening is totally unreal. The Glazers' valuation is insanely fanciful. Sheikh Jassim offered almost double the market capitalization. He was a cash buyer. He was going to clear all their debts. There would be no debt. And he was going to put in another 1.4 billion pounds for the stadium and the team. All that still wasn't enough for the Glazers. What we are left with now after almost a year is someone who is going to overpay for 25% of the club. They are arguably the greatest and most historic football club on the planet. Just imagine, एक बंदा 25% because he can lick the boots. Lick the boots of the owner. भाई देखो, जब सांप डस ले तो फिर कुछ नहीं बोल सकते. But I am happy that at least it's gone out of the window. We all now have a clarity. It's as simple as that. It's a joke. If they just wanted to sell a minority stake, they could have done it privately now last November. The market dictates what United are worth, not the Glazers or Rain. Remember when there were apparently 8 serious bidders? All along, there has been one bidder for 100%, and that is Sheikh Jassim. Ratcliffe is overpaying, and any valuation higher than Sheikh Jassim is sheer lunacy, which we all know. Like this is where it hurts. United can't keep up with Brighton these days. Never mind Man City, Liverpool, and Arsenal, which is a fact. Exactly.
वही है भाई, दैट इज व्हाट इट इज, व्हाट इट इज. 100% अकमल भाई, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ. इफ एनीवन इज नॉट रिलेटिंग टू इट, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग. कोई मेरे को ज्ञान मत दे यार. भाई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, 25%. And people have the audacity to go out and say he will pay more than Sheikh Jassim. He is not gonna pay more than Sheikh Jassim यार. उसके पास पैसा ही नहीं है. He cannot even come close to Sheikh Jassim. Totally different. And this is a very good point. Totally different. But I don't think Qataris will get into it because finally they have a clarity. They have moved on. So I don't think Glazers are going to face any legal implication. ठीक है? Because उन्होंने किसी को ये नहीं बोला था ना that we will definitely sell you, and then they backed out. They were like, we are getting the bids. And now they can say that they are going with the bid of Sir Jim Ratcliffe. वापस डाल दो यार, वापस डाल दो. बहुत बड़ी कमेंट्स दिखते नहीं है भाई. भाई as I said, nobody would have known at that point of time. No chance, Tamim bhai, it's done. Most simple sense doom. That's what I wrote as well. भाई स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल क्रैश करेगा ना अभी. यूनाइटेड के शेयर प्राइसेस तो बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे. इम्प्लीकेशन जिन्होंने हाई होने पे खरीदा है उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं. भाई ये हवाबाजी है. अभी जब आ जाएगा तब यकीन करना. ये हवाबाजी है. Just to make sure that the fans are not angry. Once they start appointing people, then I will believe. The first thing that happened after the statement from Romano was that the job for Eric Ten Hag is safe. Just imagine. ये इनका पहला आया था. सबसे पहला जो PR प्रोपेगेंडा जो है, that was the manager's job is safe. ताकि ये हमारी मार न लें. Exactly. क्या ही बोलूं भाई मैं. भाई रैटक्लिफ वाले वही है विच आर अगेंस्ट द स्टेट मनी. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू आर अगेंस्ट द स्टेट मनी, बट यार तुम्हारे क्लब के पास बहुत पैसा है. जो बोलते हैं ना वी डोंट नीड स्टेट मनी, वी डोंट नीड कतार, है उनको हमें स्टेट मनी के लिए चाहिए ही नहीं यार. इफ रैटक्लिफ टेक्स 100% ऑफ द क्लब टुमारो and he has a proper plan for the club, I will back Ratcliffe यार. मेरे को मेरे क्लब से मतलब है. आई डोंट केयर इफ इट्स ओन्ड बाय सर जिम रैटक्लिफ और कतार. We have our own money. I need a person who comes up with a structure. It's as simple as that. लोगों के दिमाग में नहीं घुसती है बात. Exactly. Absolute bullshit. I have seen people are like, oh, 25%, it will be this, it will be that. Just imagine if he's taking over in the next 3 or 5 years. When is he going to make sure that the club is on the level that it is expected to be? 15 साल बाद. Exactly. This is the main issue. People don't understand the biggest issue with anything we want to do in transfer market is because of the debt. It's as simple as that. मैं जो अनपढ़ गवार लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती तो हिलाते रहो बैठ के. Everything, every financial decision that we have to take will be taken because of the debt. हमारा डेट इतना बड़ा है. Exactly.
Malvin, welcome to the stream, man. 80-year-old businessman beat Qatar. No, it's not about that. It's not about that. People need to understand. He is not beating. Okay? He is not beating anybody on a fair term. One is willing to take the club 100%, debt and everything out of the equation. One wants 25% just to lick the boots of the Glazers. It's a totally different thing. People need to understand. It's not about who won, who lost. It's about the terms and conditions on which they won or lost. Won or lost. Simple. So it's not about, oh, they have got 25%, so they have beaten Qatar. How can you beat Qatar when you are buying 25%? You have not beaten them. You have basically taken a shortcut just to leak the boots of Glazers. That's what you have done. Exactly. This is exactly what happened. PR team is already working 24/7, guys. PR team is already working 24/7. The first news that we got to hear was manager will be safe. Okay, now it's coming in that, oh, you know what? We will keep the likes of, we will appoint the likes of Paul Mitchell. Just keep on listening to what they are putting up for the fans. Exactly. They took the best decision for themselves. They fucked up the fans, as Kaveh said as well. Why he was willing to pay double the amount of the actual value in the market. Double the amount. Taking care of the community, taking care of the training facility of the stadium. And Shai, they won't do it. I think they will move their focus to Spurs or they will move their focus to Italy. I think that's what they're going to do. Exactly. We are. प्रदीप भाई फैक्ट है. निपुण भाई क्या हाल चाल भाई सबको तो everyone celebrating नवरात्रि. A very happy नवरात्रि. नीरज भाई, that's what I'm saying. We need clarity. As a fan, I really want to hear. That's why I'm not going all bonkers. कि भाई छाती वाती नहीं पीट रहा मैं. ठीक है. At this point of time, I really want to hear what Sir Jim Ratcliffe is going to say. I don't want that I will put Manchester back in Manchester bullshit. Yeah, by Sheikh gaya. As I said, Malman, they lost because Glazers fucked them over. Even if you have money, Malman, and if you are, if you are being asked to pay double for something which is not worth it, okay, you are not going to pay 10 billion for an entity which is worth like 3.5 billion in the market. You are simply not going to do it. It's as simple as that. Exactly, bhai. I have been saying this, and that's the exact truth that you have said. One is short term, one is long term. भाई देखो अभी when you have NDA signed, nobody knows. Everyone is just about their own opinion. मपेटियर्स को तो मैं देखता ही नहीं भाई. मरवाने दो इनको. Fair enough, नीरज भाई. Right? They had everything. They had clarity about everything. I'm talking about the Qataris. They came up with everything in detail. How much money they are going to put for the stadium, okay, for the community, for women's team, for transfers and all that. एक particular था उनके पास कि इतना पैसा हमें यहाँ पे डालना है. This much money will go to the owners, and this much money debt. They had everything simplified. And then we have a guy who says Manchester in Manchester.
if somebody can make me understand what it actually means, ठीक है भाई, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी. Because anybody who is literate and understand English, he won't, they have not been able to come out and justify this statement. कुछ नहीं होगा भाई, that will be there. चलो, thanks a lot संकेत भाई. भाई they will definitely go for the Spurs. लिवरपूल शायद नहीं, बिकॉज भाई एफएसजी भी वैसे ही है. एफएसजी भी एक नंबर के गए गुजरे लोग हैं. मेजर ट्रॉफीज just forget it भाई. DJ, just forget major trophies at this point of time. Those who are having high expectation and hopes, I don't know how you are having those high expectations and hopes. Well done. And I will be ending the stream on this statement itself. It was about making the club great, and it was about vanity project with his besties, Joel and Abraham. It's as simple as that. Guys, stay safe. Have a great Sunday. Rest of the Sunday, whatever that is left of it. Stay safe. I will see you hopefully tomorrow. And we have, even injury news regarding Casemiro, so we are waiting for that as well. Good night, guys. Take care.